Hello everyone, welcome to BioWorld. Today in this lecture we'll discuss about pteridophytes. As in previous lecture we have discussed about bryophytes. Bryophytes, even they are also non-flowering plants. So same pteridophytes, they are non-flowering, seedless, सीड्स फॉर्म नहीं होते, एंड क्रिप्टोगैमस फ्लावर. क्रिप्ट मीन्स क्लोज्ड, हिडन. गैमस मीन्स मैरिज, मतलब कि क्लोज कंडीशन में जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज क्रिप्टोगैमस. मोस्ट इम्पॉर्टेंट हियर that reproduction occurs by spore formation. They are observed in moist places as well as on sandy soil also. They required water for fertilization. Okay. Now most important, this pteridophytes, they are the first true terrestrial plant. तो ये सबसे ऐसे पहले प्लांट है कि जो ज़मीन पे देखने मिलते हैं. सो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, एंड इज देयर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, दैट मीन्स दे आर हैविंग कॉन्टेक्ट विथ सॉइल. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिमेंबर, दे possess vascular tissue, that is xylem and phloem are present. This is most important thing. First vascular system is observed in pteridophyte. Remember, our first terrestrial plants, they are pteridophytes. Okay, so most important, as they are first true land plants, so they are called as a reptiles of plant kingdom. या फिर पूछे भाई स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम, तो भी याद रखना टेरिडोफाइट्स और रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम. ओके. Then remember, when we talk about xylem, so in xylem, the true xylem vessels are absent. And when we talk about phloem, so in phloem, that companion cells and sieve tube are absent, but sieve cells are present. So this is most important thing. Xylem true vessels are absent, and in phloem that companion cells and sieve tubes are absent and sieve cells are present. Okay, remember this. Next, let's see some importance of this. So importance of pteridophytes, they are used as a medicinal purpose. मेडिसिन उसमें से मिलती है. इवन यूज एज अ सॉइल बाइंडर्स. ज़मीन पे पूरा फैल जाता है तो सॉइल को बाइंड करता है, राइट.
Then many species are edible, so used as a vegetables, right? Then pteris and Diopteris are used as a ornamental plants, are used for a decoration or attractive look. Then most important, as a biofertilizer, this is most important, that Azolla species roots have एनाबीना स्पीसीज, जो अजोला फॉर्म्स है उसके साथ एनाबीना स्पीसीज रहती है, टू हेल्प एंड टू फिक्सेशन, एंड टू फिक्सेशन में ये हेल्प करता है, राइट? तो ये हो गया टेरिडोफाइट्स का इम्पोर्टेंस, याद रखना। ओके, चलो next. Now here that spores are developed in sporangia. जो भी स्पोर्स डेवलप होते हैं वो स्पोरेंजिया में डेवलप होते हैं। दैट स्पोर्स अगर वो सिमिलर है देन दे आर नोन एज अ होमोस्पोर्स, राइट? और अगर वो सेम नहीं है, सिमिलर है, तो उसको बोलते हैं, वो प्लांट्स को बोलते हैं होमोस्पोरस। एंड इफ इट इज नॉट सिमिलर, राइट, मतलब कि टू काइंड्स के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, डिसिमिलर होते हैं, देन राइट, ये जो प्लांट्स है उसको बोलते हैं हेट्रोस्पोरस, राइट? तो जिस प्लांट में स्पोर्स सिमिलर डेवलप होते हैं दैट प्लांट इज नोन एज अ होमोस्पोरस प्लांट, एंड अगर वो डिसिमिलर है तो उसको बोलते हैं हेट्रोस्पोरस प्लांट, राइट? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है? अगर सिमिलर है तो होमोस्पोरस, एंड डिसिमिलर है, एक लार्ज है और एक स्मॉल है, देन इट इज नोन एज अ हेट्रोस्पोरस प्लांट, राइट? और हेट्रोस्पोरस देखने मिलता है मोस्टली किस में, तो सेलाजिनेला एंड साल्विनिया, उसमें देखना मिलता है हेट्रोस्पोरस, राइट? उसमें जो लार्ज है वो उसको बोलते हैं मैक्रो, एंड जो स्मॉल है उसको बोलते हैं माइक्रो, ठीक है? तो हेट्रोस्पोरस, माइक्रो एंड मैक्रो। ओके, चलो नेक्स्ट। अब ये जो स्पोरेंजिया है, दिस स्पोरेंजिया आर मे बी प्रोड्यूस्ड इन ग्रुप्स। देखो, अलग अलग स्पोरेंजिया होती है या फिर वो पूरा एक ग्रुप बनाता है, राइट? सो इन ग्रुप्स, राइट? और उसी को बोलते हैं स्पोरोफिल्स, राइट? तो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस इन अ ग्रुप्स और दैट इज इन स्पोरोफिल्स। नाउ मोस्ट important, young leaves of sporophyte, they show सर्सिनेट मतलब वो ऐसा पूरा ऐसा उसका जो लीफ होता है ऐसे वो उसका सर्सिनेट हो जाता है, पूरा ऐसे कर्ल हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं उसको कॉइल्ड फ्रॉड, राइट? तो जो यंग लीव्स होते हैं
उसमें ऐसा सर्सिनेट देखने मिलता है। तो देखो मैं आपके लिए लाइव एग्जांपल लाई हूँ। तो देखो ये पूरा यंग है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा सर्सिनेट ऐसा पूरा कॉइल स्ट्रक्चर देखने मिलता है और ये ऐसे ग्रो होता है। देखो आप कंपेयर कर सकते हो कि ये एक यंग लीव्स है और जैसे ये देखो ये एक मैच्योर है। तो आप देख सकते हो कि मैच्योर में ऐसे ये फुल्ली डेवलप है। तो देखो यहाँ पे सर्सिनेट देखने नहीं मिलता है, बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप क्लियर कंपैरिजन कर सकते हो कि ये यंग है तो यहाँ पे ऐसे पूरा सर्सिनेट देखने मिल रहा है, पूरा ऐसा कॉइल कॉइल कॉइल, और ये पूरा मेल मैच्योर है तो इसमें ऐसा सर्सिनेट देखने नहीं मिलता है। आप देख सकते हो ये मैच्योर कितना बड़ा है फॉर्म, ठीक है, और ये बेचारा ग्रोइंग है। तो आप क्लियरली दोनों की कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है, क्लियर, ओके। सो यंग लीव्स ऑफ स्पोरोफाइट दे शो सर्सिनेट। मैंने आपको दिखा दिया सर्सिनेट क्या है, राइट, ओके। देन सेक्स ऑर्गन्स, जो भी सेक्स ऑर्गन्स हैं दे आर मल्टी सेल्यूलर, बहुत सारे सेल्स होते हैं, एंड दे आर जैकेटेड, सराउंडिंग में जैकेट का प्रोटेक्टिंग लेयर होता है, जैकेट होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो फेसेस होते हैं लाइफ में, एज वी नो दैट इज स्पोरोफाइट एंड सेकंड वी नो that is gametophyte, right? So when we talk about sporophyte, so sporophyte, they are dominant stage. It is dominant stage. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट गैमेटोफाइट, डोमिनेंट मतलब कि ये मेन स्टेज है, और गैमेटोफाइट दिस इज इनकॉन्स्पिशियस, मतलब कि ये क्लियरली विजिबल स्पेस नहीं है। तो ये स्पोरोफाइटिक स्पेस डिप्लॉयड होता है 2n, तो ये हैप्लॉइड होता है। अब ये जो स्पोरोफाइट फेज है तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड विच प्रोड्यूस स्पोर्स, right? So spores, are produced on leaf, and here that leaf is called sporophyll, right? जो स्लीप पे ये स्पोर्स होते हैं उसको बोलते हैं स्पोरोफिल्स। और सेकंड ऑप्शन, इन सम केसेस दैट स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ दे कॉम्पैक्टली अरेंज, पूरा यूनाइट हो जाते हैं एंड फॉर्म्स स्ट्रोबिलस, और या फिर उसको हम बोलते हैं कॉर्न, राइट? ये किस में देखने मिलता है? सेलाजिनेला एंड इक्वीसेटम, सेलाजिना एंड इक्वीसेटम। तो समटाइम्स क्या होता है कि पूरे ऐसे जो लीव्स है वो यूनाइट होते हैं ऐसे और कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और पूरा ऐसा कॉर्न जैसा बनाता है, राइट? सो सम केसेस स्पोर्स प्रोड्यूसिंग लीव्स दे कॉम्पैक्टली अरेंज इन अ स्ट्रोबिलस, और वी कैन से कॉर्न। किस में अरेंज होते हैं? कॉर्न में, सेलाजिना एंड इक्विसेटम, ओके। नाउ ऑन लीफ, जिस लीफ में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं तो
तो उसको बोलते हैं स्पोरोफिल्स। अब ये जो स्पोरोफिल्स है, राइट, अगर वो साइज लीफ की स्मॉल है या फिर लार्ज, सो दैट लीफ इज नोन एज अ माइक्रोस्पोरोफिल, और अगर लार्ज है तो उसको बोलेंगे मैक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, तो लीफ अगर वो साइज छोटी है तो उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, और साइज बड़ी है तो उसको बोलेंगे मैक्रोस्पोरोफिल, राइट। इसका एग्जाम्पल है सेला, जिनेला, और लार्ज किस में देखने मिलता है, फॉन्स में। अच्छा, और ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट है उसको बोलते हैं माइक्रोफिलस प्लांट, तो उसको बोलेंगे मैक्रोफिलस प्लांट। ओके बेटा, जैसे हमने आगे डिस्कस किया था कि भाई स्पोर्स होमो और हेट्रोस्पोर्स होते हैं, राइट। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि कुछ में माइक्रोस्पोर्स और कुछ में मैक्रोस्पोर्स देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे एकदम क्लियर कर दिया कि भाई जो लीफ में स्पोर प्रोड्यूस होते हैं उसको बोलते हैं स्पोरोफिल्स, राइट। ओके, तो जो स्मॉल लीफ में होते तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, और लार्ज है तो मैक्रोस्पोरोफिल, लाइक फॉन्स। तो आप देख सकते हो ये लीफ, ये फॉन्स है, और क्लियरली आप देख सकते हो स्पोरेंजिया। क्लियरली विजिबल है, आप ईच लीफ में आप देख सकते हो, एकदम क्लियर ब्राउन कलर की डॉट 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 देखने मिलती है। ओके, क्लियरली विजिबल है। राइट, पूरा ऐसे डॉट 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 दिखता है। ओके, चलो। सो मैंने आपको माइक्रोस्पोरेंजिया भी बता दिया, मैक्रोस्पोरेंजिया दिखाया, मतलब मैक्रोस्पोरोफिल दिखाया, ठीक है। और फॉन्स लाइक मतलब फेदर, जो बर्ड्स के फेदर है उसके जैसा दिखता है उसको फॉन्स बोलते हैं। आप देख सकते हो वो फेदर जैसा दिख रहा था, राइट, जिसको क्या बोला है, फॉन्स बोला है। ओके, सो ये हो गई बात स्ट्रॉबिल्स और स्पोर फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मैक्रोस्पोरोफिल। क्लियर? Okay, now here the sporangia, it produces spores by meiosis in spore mother cells, and the spores germinate to give rise to inconspicuous small but multicellular free living photosynthetic thalloid gametophyte called as a
प्रोथैलस। छोटा एकदम टाइम रहता है ये प्रोथैलस, छोटा सा होता है, राइट, एंड थोड़ा हार्ट शेप होता है। दिस gametophytes require cool, damp, shady places to grow, right? And because of this specific restricted requirement, and the need for water for fertilization, most important, the spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical region. So this is most important. Question may be asked, why pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical region, और उसका स्प्रेड इतना क्यों लिमिटेड है. Okay, so just see highlight. So sporophyte, due to meiosis it forms spores which is haploid. It will form, or it will germinate to form prothallus which is haploid, prothallus which is gametophyte phase, then prothallus maybe of two types, that is male gamete and female gamete. They fuse and form diploid zygote, and this is sporophytic phase. So this is, we can say, alteration of generation. Now let's see some terms. So first, when we talk about here gametophyte, देखो bryophytes में भी देखा था, but gametophyte. So here a gametophyte, it is a plant, but this is, you know, haploid phase that produce gametes by mitosis in order to produce zygote. सही बात है ना, पहले वो gametes फॉर्म करेगा और वही gametes फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा, zygote बनेगा. Same way sporophyte. So sporophyte again a plant, but which is in which phase? Diploid phase, right? And most important, that produces spores by meiosis in order
टू प्रोड्यूस, जब मियोसिस होगा तो क्या फॉर्म होगा? गमेटोफाइट्स। ओके, ठीक है। चलो, एक नया वर्ड आएगा, मेगास्पोर। So in plants, a haploid spore that develops into a female gametophyte that is known as a megaspores. ठीक है, जो फीमेल gametophyte बनता है, राइट, उसको मेगास्पोर्स बोलते हैं। वैसे माइक्रोस्पोर इन अ प्लांट्स, a haploid spore that develops into a male gametophyte। ठीक है, जो मेल में डेवलप हुआ वो माइक्रो और फीमेल में हुआ वो मेगा। मेगा लड़की का नाम है, ऐसे याद रखने का, तो फीमेल। ठीक है, ओके। चलो, एक चीज़ एक्स्ट्रा याद रखना, आगे रह गया बोलना, जो होमोस्पोरस है उसका एग्जाम्पल नहीं बोला था, टेरिस। हेट्रो का बोला था, फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। हेट्रोस्पोरस है, सेलाचिनेला एंड साल्विनिया। ओके, सो होप सो ये समझ में आया होगा, एक्स्ट्रा है। चलो, अब उसका लास्ट क्लासेस। तो पहला क्लासेस सिलोप्सीडा, then Lycopsida, then Sphenopsida and Pteropsida। उसके जस्ट एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो Silopsida, its example is Silotum, then Lycopsida, that is Salogenella, then Sphenopsida, its example is Equisetum, that is horsetail, and Pteropsida, its example is Pteris, Dryopteris and Adiantum। ये जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ओके, सो दिस इज अबाउट pteridophytes. You have probably seen ferns growing in gardens or in someone's backyard. Ferns are a type of pteridophyte. Pteridophytes are plants that flourish in a damp, cool and shady habitat, although some species also grow in sandy soil conditions. They occupy a special place in plant evolution, as they were the first terrestrial plants to possess vascular tissues and true root, stem and leaves. The leaves of a pteridophyte are large as in ferns or small as in the case of Selaginella. Pteridophytes are widely used as ornamental plants, soil binders, and for medicinal purposes. Based on the organization of the plant body, including the nature of the leaf and location of sporangia, they are classified as Coelopsida, Lycopsida, Sphenopsida, and Pteropsida.
The life cycle of a pteridophyte begins when the plant body, a sporophyte, bears sporangia, which are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. However, in some genera like Equisetum, sporophylls might form distinct and compact structures called strobili or cones. The sporangia produce spores in spore mother cells by meiosis, which germinate into gametophytes called prothallus, a small, multicellular, free-living and mainly photosynthetic gametophyte which grows only in cool, damp and shady places. The prothallus also bears the male and female sex organs, the antheridium and archegonium. The antheridium produces the male gametes called antherozoids, whereas the archegonium produces an egg. When released, antherozoids travel through water and eventually reach the mouth of the archegonium, where each one fuses with an egg to form a zygote. This zygote develops into a young embryo, which further develops into a multicellular and well-differentiated young sporophyte, and ultimately into a mature sporophyte. This completes the life cycle of a pteridophyte, which is divided into the gametophytic phase and the sporophytic phase, the most dominant phase. Pteridophytes can be homosporous or heterosporous. Homosporous pteridophytes produce spores of similar kind, while heterosporous pteridophytes produce two different types of spores, large or megaspores and small or microspores. Megaspores germinate into female gametophytes, which produce eggs, while microspores germinate into male gametophytes, which produce antherozoids. The egg and antherozoid fuse to form a zygote, which develops into a young embryo, which then gives rise to a sporophyte. These pteridophytes occupy an important place in the plant kingdom, as they were the first plants to have true roots, stems and leaves, as well as vascular tissues.